Assalamu alaikum. It's me Sarfan. Today's lecture is about responsibilities of youth on page 3. Students, responsibilities of youth excerpts from the speech of Quaid-e-Azam delivered at Dhaka University. Convocation on 24th March 1948. It's about responsibilities of youth. Now, Quaid-e-Azam said, freedom, however, does not mean license. Freedom does not mean license. Now, license, it's permit. Permit. Kulli chut. Freedom does not, however, does not mean license. ताहम आज़ादी का मतलब खुली छूट नहीं है. He said that now you are more responsible. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like irrespective of the interest of other people or the state. Irrespective, regardless of. Irrespective, regardless of. Qat'i nazar in Urdu you can say. इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप ताहम आज़ादी का ताहम इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप अब जो चाहे करो कतई नजर इसके कि वो लोगों या रियासत के मफाद में हैं या नहीं. I'm repeating it again. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like irrespective of the interest of other people or the state. इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप अब जो चाहे करो कतई नजर इसके कि वो लोगों के या रियासत के मफाद में है या नहीं. Means for your personal interest you can't act in this state. You have to do, you have to deliver. In what context? For the interest of your own people, for the prosperity of your country, for the progress of your nation. For that you are responsible. क्या मतलब कि अब आपने डिलीवर करना है. आपने वो कुछ नहीं करना कि जो आपके मफाद में हो वो रियासत के मफाद में है या लोगों के मफाद में है या नहीं है. आपने ये नहीं करना. आपने डिलीवर करना है रियासत के मफाद में, लोगों के मफाद में. नाउ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट? किस पे कॉम्प्रोमाइज करना है? ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ योर नेशन, फॉर द सेक ऑफ योर पीपल, आपके लोगों की खातिर, आपकी कौम की खातिर. A great responsibility rests on you, and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और अब पहले के बरअक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम की तरह काम करें. अब क्या करें? हम एक मुनज़्ज़म और मुत्तहिद कौम की तरह हम क्या करें? It is necessary for us to work as a united and disciplined nation. What is now required of us all is no.
A great responsibility rests on you, and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. क्या करें हम? आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, और आप पहले के बरअक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम की तरह क्या करें? काम करें. Now we have to deliver as a united nation. Is a united nation. एक मुत्तहिदा कौम की तरह हमें डिलीवर करना है. The next sentence, and it is one of the responsibility on us. Next one is, what is now required? No. What is now required of us all is constructive spirit, and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. Constructive spirit यानी तामीरी जज्बा. कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, तामीरी जज्बा. मिलिटेंट स्पिरिट जंगजुआना जज्बा जिसको हम कह सकते हैं. मिलिटेंट स्पिरिट, जंगजुआना जज्बा. क्या फरमा रहे हैं कायदे आज़म? What he said, what is now required of us all is constructive spirit, and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. Now translation. हमें अब तामीरी जज्बे की जरूरत है, बजाय इस वक्त के जंगजुआना जज्बे के जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे. What were our motives? That we were fighting at the time for the sake of freedom. Now we are free. We got freedom. Pakistan is an independent country. What we need now? To deliver for our country, to make it, this country prosperous. That is now required of us all is constructive spirit, and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. Next, it is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. For the attainment of freedom. Achievement. For the achievement of freedom. For the attainment of freedom, it is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. तामीर करना बजाय अपने आजादी हासिल करने के लिए लड़ने से बहुत मुश्किल है. What he said? It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. क्या फरमाते हैं काजी आज़म मोहम्मद अली जनाब? कि तामीर करना बजाय अपने आजादी हासिल करने के लिए लड़ने से बहुत मुश्किल है. लड़ने से क्या है? बहुत मुश्किल है. Next sentence. It is easier to go to jail or to fight for freedom than to run a government. आजादी हासिल करने के लिए जेल जाने के बजाय हुकूमत चलाने के यानी जेल जाना बजाय हुकूमत चलाने के बहुत आसान है. तामीर करना बजाय
आजादी हासिल करने के लिए जेल जाना बजाय हुकूमत चलाने के बहुत आसान है, बहुत आसान है। It is easier to go jail or to fight for freedom than to run a government. Yes. Qaid-e-Azam said it is easier to go to jail, but to run a government is more difficult. Next sentence. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. मैं आप लोगों को उन तकलीफ में से जिनसे हम गुजरे हैं में से चंद बताता हूं और साथ वो खतरात भी जो आगे मौजूद हैं, जो आगे मौजूद है। कायद-ए-आज़म said that I am going to highlight the hurdles, difficulties which still we have to face. I am going to highlighting them. क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि फिर रिपीट करता हूं, let me tell you something of the difficulties that we have overcome, जिसमें हमें क्या करना है? काबू पाना। Of the dangers that still lie ahead. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turn their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Weaken and destroy us. हमारे दुश्मन जिनकी पाकिस्तान को मर्ज़े वजूद में आने से रोकने की ख्वाहिश को नाकाम बना दिया गया और अब इन्होंने अपनी तवज्जो पाकिस्तान को दूसरे तरीकों से कमजोर करने और तबाह करने पर लग गई हैं। क्या की गई हैं? Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turn their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. And destroy us. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said clearly read, still we are responsible as an individual and as a whole nation to overcome the challenges, which are still in front of us. And what are the challenges? What are the hurdles? That our enemies turn their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. It is one of the big challenge, and we have to overcome it. We have to overcome it. I mean this challenge. Thought first. Next, thus hardly had the new state come into being when came to Punjab. Thus hardly had the new state come into being when came